All right, I'm ready. So it says, with the help of a production possibility curve diagram, yeah, diagrams, if you notice, there is a bracket over here. So bracket means that you can do one or you can do two. Um, but मेरे ख्याल में तो इस क्वेश्चन के अंदर you can't make a constant and an increasing opportunity cost in one diagram. So I don't know why there is a bracket over here. When I did the marking for the Cambridge, तो उसके अंदर we were looking for two diagrams. सही है, so mark तो हमने दो के ऊपर ही दिया था, and there were I don't remember any instance के बच्चों ने दो diagrams ना बनाए, because ये एक में हो नहीं सकता. Okay, and consider how choices in deciding which type of goods to produce in the short run may influence future economic growth. ठीक. So how do we go about this? कौन सा diagram बनेगा इसके अंदर? सबसे पहले, if it's always recommended that you should define the production possibility curve. When I'm checking your paper, do I care for it? Honestly, if the marking scheme doesn't say कि पीपीसी के लिए आपने मार्क्स देना है, तो आई डोंट केयर फॉर कि तुम पीपीसी लिखो कि नहीं लिखो. बट जस्ट इन केस इन फ्यूचर अगर कल को दे डिसाइड कि यू नो व्हाट देयर इज अ मार्क फॉर इट, तो वी वांट टू बी ऑन द सेम सेफ साइड एंड वी वांट टू स्टार्ट विथ द डेफिनेशन. ठीक हो गया. It shows various combinations of two goods an economy can produce by fully utilizing the resources. Stay bookish, कोई मसला नहीं है, right? फिर उसके बाद, this is November 24, variant 22, question 3A, 8 mark. To remind you once again, how is the 8 mark broken down? It's assessment objective 1, which is knowledge and understanding for 3 marks. Assessment objective 2, which is analysis, another 3 mark. And finally, the third one is evaluation. Because it's the second last most recent examination, you remember I was in the previous questions, I was talking about something कि किस तरह से evaluation should reflect the analysis that you're doing in the past. This is the question in which we will actually come across that problem. So let me tell you, what are we doing about this then? सबसे पहले they're saying explain the difference between a constant and an increasing opportunity cost with the help of a production possibility curve. So that means you are making diagrams, one for increasing and one for constant. If you've done the theory, you've seen the notes that I've shared with you for PPC. Um, if you're making two diagrams, this is how they're supposed to look. एक increasing का. अच्छा, by the way, which good to factor in? If you do the chapter, you will come across कि जब हम question में short run और long run यानी future के बारे में बात कर रहे थे, so we had an application wala note, which is there in the book also, which talks about the capital and the consumer good, right? Capital goods, consumer goods. And if you remember, जब हम ये अपना diagram बनाते हैं, so we want to be mindful, capital good, and this is your consumer good. एक आप बना रहे हो constant का. So how do you make for the constant? It's a straight line which goes like this. And एक आप बना रहे हो increasing का. Okay, one you're making is for the constant. अब constant का हम किस तरीके से करेंगे? Constant का we're looking at is going to go like this. Increasing. ठीक है? These are the only two that you have in your course. इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है. If you make these two,
knowledge and understanding ke, obviously because you're answering, have you explained it? You've really not explained it, what the question is asking for. ठीक है, but is there a mark to it in knowledge and understanding? Maybe, maybe not, we're not sure, लेकिन क्योंकि उन्होंने ग्राफ मांगा है तो ग्राफ के तो मार्क्स हैं. A lot of people, what they did was they made these two. And in their heads, when they made, it was very evident कि left वाला constant है और right वाला increasing है, but they did not write anything about it. So even though these diagrams were made, we did not give them marks. ठीक है? In order to get marks, you had to mention कि ये constant है. Okay? And ये वाला increasing है. What the good thing that a lot of kids did was they took this explain seriously, and what they did was after making the diagram, even if they did not mention constant versus increasing, they did mention कि figure 1 के अंदर उसकी पूरी explanation and figure 2 की पूरी explanation. Now, many kids, what they did was, because constant और increasing में फर्क क्या होता है, तो हमें ये पता है, and in the marking scheme, we're looking for just an indication that the kid says that figure 1 में, as you're producing more of consumer, the opportunity cost does not change. Just these words, okay? मैं personally would not have been happy अगर ये मेरा कोई एएस का बच्चा निक्सन में या कहीं किसी और कॉलेज के अंदर लिखता है कि opportunity cost doesn't change. I would not give them mark for it, honestly, because does not change. What do you mean by that? With the help of the diagram, explain me. What do you mean by that? And in figure 2, if they write that the opportunity cost, uh, increases as you're producing more of consumer goods. Cambridge ka examiner is willing to give you 1 mark for this, 1 mark for this, and 1 mark जब अगर तुमने doesn't change or it increases कर दिया है. What I think it should be is this. क्योंकि इस डायग्राम के अंदर कांस्टेंट की क्या बात है, in order to show that, which I did in, I think, the previous class, this is what would have helped. You break it down into 3. तो मैंने कैसे किया, ये break down into 3 कैसे किया, जो मेरा x axis के ऊपर टच हुआ उसको मैंने 3 दिया और फिर मैंने equal breakdown कर लिया इसको. ठीक है? And then I would make a dotted line something like this. And I would make a dotted line like this, and I can do the marking as like 6, 4, and 2. Just how I've already done this with you before. I'll do a similar thing over here. Let's mark this as 3. Let's break it down into equal portions. If you ask me क्या numbers जरूरी है, नहीं. You can show it with arrows and notations, that how this distance is equal to this distance and how this distance is showing an increasing impact. Do you follow? Here, ho kya raha hai? Those of you who've done PPC and we've talked about it, if you were here, this point right here, what does this show? आप सिर्फ और सिर्फ capital goods बना रहे हैं and nothing of consumers. This coordinate right here shows 6 capital, 0 consumer. If you decide to increase the production of food from 0 to 1, now you're producing here. So in order to go from 0 to 1, you're giving up how much? You're giving up 2. Uske baad, when you went from here to here, if you increase the production of 1 more consumer good, you give up another 2. This idea shows that ये constant है. If you had only
only did this part and showed कि देखो 2 का drop आया and that shows that this is constant, that's really not proving the opportunity cost is constant. What opportunity cost does not change means that every time you produce one extra consumer, you give up exactly the same amount, yani 2, 2 and 2. ठीक है. इट डजंट मीन कि इट डज नॉट चेंज मीन्स कि ये अगर वन 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 होता तो वो भी सही था. इट डजंट मीन कि इफ यू गेटिंग वन ओवर हियर एंड यू गिविंग अप वन ओवर हियर, दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स. व्हाट इट मीन्स इज इन ऑर्डर टू गेन वन ओवर हियर, you're giving up whatever you're giving up remains constant. लेकिन इस केस के अंदर if I do it numerically, just follow, bear with me, because I already know the numbers, तो इसकी वजह से I'm able to do that. First case के अंदर when I went from point A to point B, I get one consumer good, but I give up two of this. फिर क्या होता है? When I go from B to C, in order to have one more of this, now I am giving up four of that. This proves that there is an increasing opportunity cost. So इस तरह से I would have done an extensive writing. How much mark would I have had? वही 3 मार्क ही मिलने थे. बेस्ड ऑन द मार्किंग स्कीम अगर तुम मुझे सिंपल ये बता देते कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट चेंज और इसमें इंक्रीजिंग होता है, आई वुड हैव गिवन यू द मार्क एनीवेज. बट आई डोंट थिंक योर कॉलेज टीचर्स शुड बी हैप्पी अबाउट दैट. दे वुड नीड अ नाइस बिग एक्सप्लेनेशन. ठीक है. अब उसके बाद पास्ट के जो हमने पीपीसी के क्वेश्चंस किए थे उसमें और इसकी मार्किंग स्कीम जो रिसेंट के अंदर आई है उसमें क्या फर्क है? दिस इज द फर्क. You know how it says explain the difference between constant and increasing, and what I did in the whole diagrams and I explained before 2024 October की marking scheme में that would have considered your analysis का discussion. Okay, it would have based on the past. एंड इफ यू रिमेंबर पास्ट के अंदर वो जो कंसिडर वाला एलिमेंट था वो आपका इवैल्यूएशन में सिर्फ ग्रेड हो रहा था. ओके. बट नाउ इन द रीसेंट मार्किंग स्कीम व्हाट दे वांट इज ये जो कंसिडर वाला पार्ट है, एंड नाउ आई सी अ कंसिस्टेंसी बिकॉज जून में दे हैड अ कंसिस्टेंसी विद दैट. कंसिडर हाउ choices in deciding, I think it might be getting hidden behind. Consider how choices in deciding which type of good to produce in the short run may influence future economic growth. ये जो consider है ना, what does that mean, consider? Consider means let's have a discussion on all sides, for and against, advantage, disadvantage. तो असल तो analysis का मतलब होता है to consider. Okay. So up short run के your decision making will have an impact on the future. अब analysis में वो discussion is required. Therefore, तो फिर evaluation में क्या करोगे? So let's take a look at this. Up once I get the 3 marks and I do the whole extensive diagram and an explanation of what do I mean by constant and what do I mean by increasing, अब आते हैं और अब डिस्कस करते हैं ये later section of the question, analysis. How choices in deciding which type of good to produce in the short run may influence future economic growth. अब यहाँ पे if you see my PPC, I'm talking about two goods, consumer and capital. Consumer and capital. These are my favorite ones, and if you've taken your you've been here for the last classes and you've seen Shahir, hopefully, the lecture, I've always said I have preference for this. Can I take some other good over here? Can I talk about some other instance? Huh? So us instance के अंदर some might say can we take merit and public? Some might say can we take capital and merit, consumer and merit? In my opinion, you can. Sure, you can. But I personally prefer these ones because examiners
usually choose the most common ones, which generally they use in their books for explanation also. Because remember, in our examiner meeting with the Cambridge examiners and team leaders, Colin Bamford attends the meeting, and Colin Bamford ki, if you remember, there is the blue one is Colin Bamford ki book, and the red one is Terry Cook ki book, who was an examiner back in the day, a few years ago. So you will be surprised कि मार्किंग स्कीम में से बहुत सारी चीजें, और जब वो आएंगी हमारे नेक्स्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ गुड्स के अंदर, मार्किंग स्कीम इज टेकिंग वर्ड टू वर्ड फ्रॉम बैम्फर्ड्स बुक कि ये लिखा हो तो एक मार्क, ये लिखा हो तो एक मार्क, एक ये लिखा हो. Honestly, those 3 marks, kids can never come up with those because they're almost talking about the same things but slightly in different words. ये मैं अभी तुमको बताऊंगा. तो बैम्फर्ड की बुक इज वेरी रीजनेबल वन टू यूज बिकॉज मार्किंग स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड पॉइंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड हेडिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड द वे द क्वेश्चंस आर बीइंग स्ट्रक्चर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से it is a very relevant book. I will be uploading on the Google Drive the chapter notes, which is mainly an extract of Terry Cooks and Bamford and sort of like summing them together based on the need basis के ऊपर ना. तो you can even look at those ones अगर तुमको वो written ज़्यादा preferred है. Okay जी. So when deciding between the choices, तो अब हम क्या करें? So let me bring this over here and then let's answer the consider analysis वाला portion. How choices in deciding which type of a good? Okay जी. अब जब हम फ्यूचर इन्फ्लुएंस की बात करते हैं कंज्यूमर और कैपिटल में, एक हमने नोट्स में एप्लीकेशन की बात की है. द डिस्कशन शुड बी कि अगर आप शॉर्ट रन के अंदर कंज्यूमर गुड की तरफ इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कंज्यूमर गुड्स की तरफ रिसोर्स रीएलोकेशन करते हैं, एंड रिमेंबर दिस इज अ मूवमेंट अलोंग द कर्व वाली सिचुएशन. अगर तुम ग्राफ से उसको लिंक करना चाहते हो तो दिस इज व्हाट यू कुड हैव डन इन योर ग्राफ. यू कुड हैव सेड कि इफ वी डिसाइड टू रीएलोकेट रिसोर्स फ्रॉम कैपिटल गुड्स टू कंज्यूमर, तो इस तरह से मूवमेंट अलोंग द कंज्यूमर गुड आएगा और उसके लिए आपको कैपिटल गुड गिव अप करना पड़ेगा. इसको आप रिसोर्स रीएलोकेशन कहते हैं. तो इफ इन द शॉर्ट रन यू डिसाइड टू मूव फ्रॉम टूवर्ड्स कंज्यूमर गुड्स, तो अब इसका शॉर्ट रन के अंदर इमीडिएट इफेक्ट तो ये होगा कि कंज्यूमर्स आर गोइंग टू बेनिफिट बिकॉज कंज्यूमर्स विल हैव मोर टू कंज्यूम एंड दे गोना बी हैप्पियर, राइट. लेकिन इसका जो लॉन्ग रन इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा that in the future you will have um, you know fewer machines and things like that. तो उसकी वजह से फ्यूचर के अंदर you will have less of both goods. Do you understand that? Now, teachers would love in this situation कि आप शॉर्ट रन लॉन्ग रन का हमें इस तरह से दिखाएं कि कंज्यूमर वर्सेस कैपिटल गुड्स के अंदर व्हाट यू शो इज कि लॉन्ग रन के अंदर द पीपीसी कर्व विल शिफ्ट इनवर्ड्स. डू यू नीड टू डू दैट? नो. डायग्राम इज कंप्लीटली एंड प्योरली ऑन द नीड टू नो बेसिस. ठीक है, जब वो मांगेंगे, जिस चीज का मांगेंगे तो आप वो वाला डायग्राम बनाएंगे. अदरवाइज एएस के अंदर इट्स वेस्ट ऑफ टाइम टू मेक डायग्राम्स. ठीक है. पीपीसी का आई मेंशन दिस बिफोर ऑल्सो, मेक श्योर यू इंटरसेक्ट इट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, अदरवाइज गलत हो जाएगा. ओके, सो हमने क्या डिसाइड किया? We've decided in the short run, if you decide to produce more consumer goods, consumers को short run में advantage है because more goods for them to consume. But in the long run, because there are fewer machines, in the future there will be less of both goods to buy. That's not a good thing.
How much mark should I give you for something like that? Maybe a mark for that discussion. ठीक है. Uh, एक मार्क कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स के डिस्कशन के लिए हो जाएगा. एक मार्क ये जो अभी हमने डिस्कस किया है. दूसरी चीज, अब मैं एनालिसिस का दूसरा हिस्सा करता हूं. In the short run, if we decide to reduce consumer goods, okay, if you decide to decrease consumer goods, so then in the short run, the consumers are worse off, and it's not so good uh, from the economic growth point of view, because there will be less goods for the people. And diagram में if you had to show something, diagram के अंदर आप इसको दिखाते कुछ इस तरह की movement along the PPC, going away from consumer and towards the capital, right? So इस तरह से आप दिखा सकते हो, दिखाना चाहते हो तो, but words are enough. But the long run implication for this is, because we're going to have more machines, because capital goods bana rahe ho, so you will have more machines. And what this will do is, it is going to shift consumer versus capital ke case ke andar, it will shift your PPC curve outwards. And as a result, we're going to have more of both goods, and this is good for economic growth in the future. ये आपका अब एनालिसिस हो जाता है. ओके. लास्ट टाइम दिस डिस्कशन पुराने मार्किंग स्कीम के हिसाब से दिस वुड नॉट हैव बीन एन एनालिसिस के मार्क्स, दिस वुड हैव बीन इवैल्यूएशन के मार्क्स. अब द थिंग Sir, इज, I have a question. बोलो. व्हाट्स अ क्वेश्चन? Sir, ये जो आपने ग्राफ बनाया है, wouldn't we shift the axes where the y-axis would be capital and the x-axis would be consumer, because we're moving away from the consumer goods, right? But this would indicate that we're increasing our opportunity cost from capital to consumer. You're talking about the second case which I'm talking about right now. The second case, yeah, the second case, not the Okay. first one. देखो, what have I done? No. In my first case, was what I said was short run ke andar, because how choices in deciding which type of good. Okay. In my first discussion, I said, ये मैं diagram को सिर्फ ऐसे ही यूज कर रहा हूँ. My main discussion was कि if I made the choice in the short run to go away from capital to consumer, तो what would have been the end result of it? So theoretically, what we say is that consumer good are things like biscuits and breads and all. Consumer pays for it, consumes it, gone, finished. Resources खत्म हो गए. ठीक है. So उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि I decided let's not make machines and let's not put power plants which can help us generate electricity in the future, but let's make biscuits and chips and let consumer consume. The problem with that is, in my first case, when that movement along the curve happens, consumer को आज तो goods मिल जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में रिसोर्सेज खत्म हो जाने की वजह से overall your productive capacity will fall. That's the future negative effect that's going to happen. And what we're answering is how consumer choice is going to impact the future economic growth. उसके लिए तुम्हें शॉर्ट रन का भी फायदा नुकसान बताना जरूरी है. What I did in my second case is कि मैंने अब बोला कि my decision is not to go towards consumer but rather to go towards capital. तो मैंने just to show you what I've done is कि मैंने अपने डायग्राम को यूज करते हुए, you don't have to do any of this honestly. Okay? Not for the knowledge and assessment का जो वो constant और increasing का था. This has nothing to do with that. This is me just showing you कि अगर आप कंज्यूमर से मूव अवे करते हैं और कैपिटल की तरफ जाते हैं, तो योर मूवमेंट अलोंग द कर्व इज टूवर्ड्स कैपिटल. अगेन आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या होगा एंड ऑल ऑफ दैट. दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस क्वेश्चन. अभी मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको एक मूवमेंट का एग्जांपल दिखा, इज व्हाट इज गोइंग.
So let's not discuss the increasing opportunity cost और उसको क्या हो रहा है in this particular case. All I'm saying is, अगर short run में you've decided to go for more capital than consumer, तो consumer को नुकसान हो रहा है because less goods are available to them. They're gonna sacrifice what Chinese did 15 years ago. And as a result, because we have more machines now, the future is good. And what we can see in China's case, basically, and we can see that in China's case, कि किस तरह से now they have more capital, so there is an outward shift that has taken place. ठीक? I hope that answers, because I've sort of Yeah, like sir. That repeated the whole thing. yeah, sir. That makes complete sense. Thank you. Okay, fine. So I hope that you were able to hear Shahir's question because I don't know if you were able to hear his question or not. Okay, Ji, moving on. So let's not complicate things too much and keep the things simplified because examiner की marking scheme in itself बहुत complications हैं उसके अंदर. अब now notice this in the marking scheme how they want to give you how they want the evaluation to happen. Uh, yeah, right here, evaluation. Up to 2 marks for valid evaluation, which is clearly based on the analysis. ऊपर जो लिखा है, analysis में जो तुमने दो साइड का discussion किया है. Now your final evaluation needs to basically look into this and come up with a valid conclusion for a mark. Past में ये नहीं हो रहा था और अब future में यही हो रहा है. तो अब हम किस चीज के बारे में लिख सकते हैं? In our evaluation, we've made a discussion on the short run, long run basis. ठीक है? In the past questions, what I said was कि देखें when you're making these decision on what type of question, तो हमने एक standard एक रखा था PPC के केस के अंदर, which is valid for evaluation over here. You know how we're saying कि resource को कंज्यूमर की तरफ ले जाएं या कैपिटल की तरफ ले जाएं, ये कंज्यूमर का चॉइस है. ठीक है? How will it have an impact on the future? अब ये evaluation हम past में लिख चुके हैं. So let me repeat क्या लिखा था हमने past में. When we are saying कि let's move our resources from here to here, एक second, there's a slight lag on the screen. Yeah. When I said let's move our resources from capital to consumer, है ना? On paper, it took me a second to do that. But realistically, is it that easy? Is it that simple for an economy to reallocate its resources? So in my evaluation, I can discuss this that ये जो हमने short term में consumer की movement की है from capital to consumer, there is a time lag issue involved over here that it is not so simple to move your resources from capital to consumer and उसका जो impact है on consumer consumption increasing is not so easy. Imagine this. एक पास में हमने क्वेश्चन किया था उसमें गवर्नमेंट ने कोशिश की कि कैपिटल से इकोनॉमी को कंज्यूमर गुड की तरफ मूव किया जाए. तो हमने उसका आंसर बताया कि गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज दे दे प्रोड्यूसर्स को ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाए, प्राइसेस गिर जाएं, तो कंज्यूमर्स विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट प्रोडक्ट. व्हाट इफ कंज्यूमर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट प्रोडक्ट मोर? तो यहाँ कंज्यूमर बिहेवियर से हमें एक चीज पता लगती है कि even if you reduce the prices so that consumer consumes more of the good, it's not necessarily going to happen. You know, there is a time lag involved. There are other constraints that are involved. Another constraint is when you want capital to move from consumer, so maybe the machines that you have, which helps you produce machines, are not so easily movable into consumer good industry. अब एक मेरे पास machines हैं जो जहाज बनाने में help करती हैं, which is a capital good. And I say, अब biscuits बना लेते हैं उन्हीं machine से.
So that's ridiculous. Maybe labor might be good enough, but capital is not, might not be so. इसको आप कहते हो factor mobilities. So what am I saying in my evaluation after me making all these discussions? कि अगर हम कंज्यूमर से कैपिटल में जाएं और कैपिटल से कंज्यूमर में जाएं, तो one of my discussion in my evaluation that I want to do is there is a time lag का problem that when I make these policies उसका अच्छा अगर अगर तुमने ये अपनी इवैल्यूएशन में नहीं लिखा ना द होल डिस्कशन एंड देन कनेक्टिंग कि फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ was क्वेश्चन क्या था अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ व्हेन यू डू दिस और दैट डिसीजन फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ पे उसका जो एनालिसिस में इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा वो टाइम लैग के साथ किस तरीके से माइट गेट अफेक्टेड या बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर एंड बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर से किस तरह से उसका फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा दैट इज योर इवैल्यूएशन एंड इफ यू नोटिस this thing that I'm discussing is going to talk about this, but notice something when you're writing this, it's not a few liners, it's a whole paragraph and a very significant volume paragraph, which is going to take a significant time. Okay? So please stop considering evaluation as a one, two, three liner. Evaluation is a whole paragraph which might almost become the size of an analysis that you've done ऊपर. ओके सो पहले तो अपना ये मेंटालिटी चेंज करो कि वैल्यूएशन इज जस्ट लास्ट यू नो a formality that you have to do. It's not a formality, it's a pure requirement of a question. ठीक है जी. um अच्छा marking when I read your evaluation and it might talk about completely something which is not talking about future economic growth and तुमने यहाँ मुझे पूरा डिस्कशन कैपिटल और कंज्यूमर में किया हुआ है और इवैल्यूएशन में यू टेक मी इनटू लाइक मेरिट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स और समथिंग जीरो अंडरस्टूड you're not getting anything because अगर तुम मेरिट और उस पे चले जाते हो तो then you're not fulfilling this requirement. Valid evaluation, which is clearly based on the analysis that you've done, and your analysis is purely about consumer and capital. Okay? Um, तो दैट इज अ मस्ट. अगर तुम ऊपर मेरिट और पब्लिक के साथ वर्क करते हो और डिस्कशन करते हो तो फिर उसका कंक्लूजन भी उसी हिसाब से होना चाहिए. इट कांट बी एन आउटलायर सॉर्ट ऑफ अ थिंग. ओके. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. प्लीज either if you're like if you have your phone, take a picture of this because you guys are attending the class every day, but you're missing out on a very important aspect of it, which is the feedback part. You write the essay, you show me the essay, you get the feedback on the essay. So far we have done today up to date 1, 2, 3, 4, 5 PPC के essays मैं करा चुका हूँ. I can share you the video of the lecture of those ones. Take a look at it. Please, at least दो से तीन लिखो, and then we'll let take feedback from me because honestly, then there's no point. जाओ कहीं और से पढ़. It makes no difference then. All right, moving on. So we'll move to today's agenda. What is today's agenda? For me, I wanted to speak about a little theoretical part and then move on to one essay. I have about 45 minutes or more. From your course's point of view, since 2023, अगर PPC के they've given 25 को भी अगर हम include कर लें, तो PPC के ऊपर 23, 24, 25, अक्टूबर, नवंबर, मई, जून, मार्च, ठीक है? So 3 sessions.
दैट्स अगेन क्वाइट अ लॉट। हमारे पास उन्होंने एक दो तीन चार पांच छह क्वेश्चंस पीपीसी पे दिए हैं अभी तक, सो फार, अप टू डेट। टाइप्स ऑफ गुड्स के ऊपर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14, about 14 questions they've so far given. We were not predicting June के अंदर they will give types of goods because they've given in our variant so often, but they did. तो अब वो बात भी खत्म हो गई इन द प्रिडिक्शन के यार लास्ट दो तीन सेशंस में दे रहे हैं तो अगले में नहीं दे सकते, छोटा मोटा चेंज करके दे कैन स्टिल गिव यू टाइप्स ऑफ गुड्स। I know in certain colleges, like Nixer में I haven't reached types of goods yet. मैं वहां पे अभी तक पीपीसी करा रहा हूँ। जब हम टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो दिस सॉर्ट ऑफ लाइक is coming from, you remember that basic economic problem था, और बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर जब वो स्कैरसिटी का इशू आया था, तो इस स्कैरसिटी को हमने डील करने के लिए वी डिड द थ्री इकोनॉमिक क्वेश्चंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो वहां जो वॉट वाला क्वेश्चन था, दैट वॉट बेसिकली डील्स विद द टाइप्स ऑफ गुड्स वी हैव। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज you have to keep this particular picture in your mind. Let me actually bring that from my notes so that I don't have to draw it. Let me bring it. Give me one second. Hmm, Types of goods. Yeah, right here. Okay, so you can possibly see it on your screen. Yeah, this is what you have to take a snapshot of in your mind. Okay, this is in your course. है क्या सीन? Classification के अंदर you have steps of classification. Your hierarchy के अंदर the first is any good you pick up in an economy. Any good. Let me say healthcare. We all know about healthcare. So let me work with healthcare because they love healthcare. अब हेल्थ केयर को आप कैसे क्लासिफाई करते हो? पहला स्टेज, इज इट एन इकोनॉमिक गुड और इज इट अ फ्री गुड? So you need to know the definitions of these two in order to determine के जो हेल्थ केयर है वो किस में जाएगा। ठीक है, फ्री गुड को जब आप डिफाइन करते हैं तो इन योर आंसर, आई डोंट नो इन ओ लेवल यू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ, बट अगर तुमको मार्क चाहिए तो फ्री गुड वो होता है जिसमें नो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ गुड, या फिर यू टेल मी that there is no opportunity cost. I'm good with that. There is no opportunity cost. ठीक है, उसके अलावा if you say something like it is abundant in nature, okay, these three things, या फिर no price can be charged, या फिर no price can be charged थोड़ा सा वेग हो जाएगा, there is no price, yeah, let's make it even more vague. Which one of them is highly advisable for your marking scheme? This and this. And then an example of it, like sunlight. You know, they can ask for more, but sunlight. I would say be safe, write everything. Okay? सब डाल दो। फिर उसके बाद इसका opposite economic good है. No such thing as vice versa. All right? There is a price for this good. Why is there a price for this good? Because factors of production are used, and those are scarce. In fact,
scarce factors of production are used. So therefore, there is अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि जब मैं एक अपने रिसोर्ट को एक गुड बनाने में यूज कर रहा हूं तो फिर उसको जो मैं गिव अप कर रहा हूं वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट? इट इज स्केर्स। एंड एग्जाम्पल के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, गाड़ी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। हम हेल्थ केयर लेके चल, इनफैक्ट लेट मी से हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इज एन इकोनॉमिक गुड बिकॉज हेल्थ केयर के लिए आपको स्carce रिसोर्सेज यूज करने पड़ते हैं, देयर इज अ प्राइस फॉर इट एंड देयर इज ऑब्वियसली एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो टीयर वन में हेल्थ केयर इज एन इकोनॉमिक गुड। प्री गुड अब इसका लीनियज खत्म हो जाता है। अब इकोनॉमिक गुड के अंदर सेकंड टीयर के ऊपर यू कैन मेक टू डिस्टिंक्शंस, अ पब्लिक गुड्स एंड अ प्राइवेट गुड। ठीक है? whenever you're discussing public or private, other than saying कि it's an economic good which is scarce and blah blah blah, anything is a private good if they have the following category. They are excludable and they are rivalry. You do not explain me. You're explaining private good. Private good कितनी दफा आ चुका है पास्ट के अंदर? There are about like 2 to 3 essays on this. If you don't tell me what is excludable and what is rivalry and what it means, using an example, healthcare is excludable, healthcare is rivalry. एक तीसरा rejectable भी है, but so far we're not giving mark or taking away mark for it. But obviously that is a third least required. Be safe, do all three. ओके? अगेन, किस तरह से हेल्थ केयर को हम कह सकते हैं कि वो प्राइवेट गुड है कि पब्लिक है? तो जब आप पब्लिक को मुझे एक्सप्लेन करोगे तो व्हाट विल यू डू? तो पब्लिक की केस के अंदर यू आर गोइंग टू टेल मी पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, एंड देन यू शुड बी एबल टू डिफाइन, रट लो मीनिंग इसका। दे आर नॉन राइवलरी एंड दे आर नॉन रिजेक्टेबल। ये आपकी थ्योरी की आपको चीज याद होनी चाहिए। अब हेल्थ केयर आई से इज नॉट पब्लिक गुड एंड आई कैन प्रूव व्हाई इट्स नॉट, एंड हेल्थ केयर इज प्राइवेट गुड एंड आई कैन प्रूव। देखें जी, प्लीज रिमेंबर इन योर एनालिसिस इफ दे से हेल्थ केयर इज प्राइवेट के पब्लिक, so if you're writing me a paragraph saying it is private, that doesn't mean that you don't need to tell me कि वो public नहीं है. You have to write the whole thing कि वो public नहीं है तो क्यों नहीं है. It's a requirement of the answer. So this is what I mean by that. And I'll do that with one of the questions also. Healthcare के अंदर, there is a way hospitals and doctors can exclude a patient. If you pay, I will treat you. If you pay, I will vaccinate you. If you pay, you know, we will consult you. But if you don't pay, then we're not going to consult you. That means it is excludable. Okay? Acha, excludability is not only from the point of view of who's paid and who has not paid. Excludability can be that, this particular doctor deals with uh, female health, so she can exclude whether she's going to treat male patients or female patients. There is an excludability. Okay? Agar if you can exclude on the basis of gender, if you can exclude people on the basis of age, if you can exclude people on the basis of any other demographic status or paid or not paid, the product becomes excludable. ठीक है? तो पहली बात, healthcare is excludable. Now I need to write a line or two to say that it is not a public good. Why? Because the same idea that public goods are supposed to be non-excludable, that means there should be
no way to charge people for it. There should be no way to exclude people. So because I can exclude people, so therefore वो उस category में नहीं आता of non-excludable, therefore it is not a good example of public. Technically one might say कि यार ये तो मैं reputation कर रहा हूँ the same idea, but sentence structure के अंदर I'm just proving कि देखो इसलिए वो public नहीं है और इसलिए वो private है. You have to take both factors in. उसके बाद healthcare is rivalry if a doctor has booked an appointment with a patient, another patient cannot book that same time. It has reduced the time in the day because doctor has scarce time. तो अगर वो एक पेशेंट को एक अपॉइंटमेंट दे दिया है तो नाउ देर आर लेसर अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल. अगर मैंने एक 100 बंदों को वैक्सीनेशन लगा दी है तो नाउ आई हैव 100 लेस वैक्सीनेशंस अवेलेबल. डू यू गेट इट? तो ये मेक्स इट अ राइवलरी. पब्लिक गुड के केस के अंदर ऑब्वियसली हेल्थ केयर इज अ राइवलरी. इट कैन नॉट बी नॉन राइवलरी बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई टेलीकास्ट डॉक्टर हूं और मैंने वीडियोस बना दिए और लोग आ रहे हैं और अपना मसला कोई टेलीकास्ट के ऊपर डील कर रहे हैं. नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल दैट दैट कैन हैपन. इसके अंदर बिकॉज रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, इफ वन पर्सन यूजेस इट इट रिड्यूसेस फॉर द अदर. ठीक है. एंड सिमिलरली अगर तुम रिजेक्टेबल को भी करना चाहो तो यू कैन रिजेक्ट अ पेशेंट एंड से कि आई कांट, आई डोंट वांट टू ट्रीट, या इन फैक्ट द कंज्यूमर कैन आल्सो रिजेक्ट द यूज कि मैंने इस डॉक्टर के पास नहीं जाना. अगर हार्ट का इस डॉक्टर यही सिर्फ डॉक्टर है पैनल के अंदर तो आई डोंट वांट टू यूज इट. आई हैव एज अ पेशेंट एज अ कंज्यूमर आई हैव द केपेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग the use of the doctor. ठीक है. Do you write up notes including information from that book? Yeah, I have it, so you can read that. It is from that book. Okay, anyhow, so moving on. तो हमने ये प्रूव कर दिया हेल्थ केयर इज अ प्राइवेट गुड. अब प्राइवेट गुड के अंदर हेल्थ केयर कौन सी कैटेगरी में आता है? यू हैव 4 कैटेगरीज: कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, मेरिट गुड, डीमेरिट. इसमें से हमें ये समझ आता है कंज्यूमर गुड इज एनीथिंग विच कंज्यूमर पेज फॉर एंड यूजेस फॉर इट ओन बेनिफिट. ओके. कैपिटल गुड इज मैन मेड टूल्स विच हेल्प्स यू प्रोड्यूस अदर गुड्स लाइक मशीन्स एंड ऑल. समझ आता है. मेरिट एंड डीमेरिट का तुम्हारी डेफिनेशन के लिए, तुम्हारे कोर्स के लिए, ओनली ओनली द थिंग विच इज वैलिड. मेरिट गुड्स are under consumed, under produced. Okay? They are under consumed, they are under produced due to information failure. This is the only definition that is part of your course about the merit good. No discussion on third party, externality, positive, negative externality, complicated diagrams where you have the marginal social benefit and marginal social cost and all of that. There is no need. Okay. I will not take you to those levels. I don't want you to study on those levels. Marginal social benefit and all the diagrams. अवॉइड. सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर अगर मेरिट गुड डीमेरिट गुड आ जाता है और वो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में तुमको एक्सप्लेन करना है एंड बेस्ड ऑन द क्वेश्चन दैट वी गोना डू, देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस ऑन मेरिट एंड डीमेरिट. अवॉइड. Avoid lengthy discussions. It is completely useless for you to do that. As far as demerit goes, it might be only useful if your teacher requires you to do it. I can't deal with that. I don't want you to deal with that because uske chakkar mein you're gonna make bigger mistakes.
Demerit goods are overconsumed and they are overproduced due to information failure. अब असल बात तो ये है, ये जो मैं इतनी इंपॉर्टेंस डाल रहा हूं इंफॉर्मेशन फेलियर के ऊपर, now that means that is something important. ये इंफॉर्मेशन फेलियर की क्या गेम है? Okay, if you remember from O levels, those of you who had O levels के अंदर you've done something called market failure, where the market fails to recognize some advantages and disadvantages of certain goods, which is basically the merit and the demerit. Okay, तो वो जो इंफॉर्मेशन फेलियर है, उसको तुम्हारे कोर्स के अंदर जो 12 मार्क का क्वेश्चन आता है मेरिट डीमेरिट पे, खास तौर पे दैट इज अबाउट द करेक्शन पॉलिसीज, हाउ यू कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर और द प्रॉब्लम ऑफ मेरिट गुड्स बीइंग अंडर कंज्यूम्ड एंड डीमेरिट गुड्स बीइंग ओवर कंज्यूम्ड। ठीक है, उसके ऊपर नाउ दैट्स योर थ्योरी एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। अब थोड़ा सा अगर हम इसकी डिटेलिंग में जाएं तो लेट मी डू वन क्वेश्चन, टू क्वेश्चंस इन फैक्ट टुडे। एक मैं क्वेश्चन तुमको दिखा देता हूं जो अभी जून में आया है, बिकॉज इट्स जस्ट फ्रेश। तो मैं बिल्कुल फ्रेश फ्रेश तुमको बता देता हूं कि हमने कैसे मार्किंग की है उस क्वेश्चन की। ठीक है, जून 22 के अंदर, या दिस वाज द क्वेश्चन विच केम। ओके, टेक अ लुक एट दिस वन। With the help of examples, explain the difference between public good and free good and consider whether a market economy can ever produce public good. Okay, so because all of you are well versed in the free and the public, how are we marking this one? What do we need? जनरली बच्चों ने किस तरीके से इसको आंसर किया होगा और हमें किस तरह से करना है? Knowledge and understanding, 3 marks. That's your assessment objective one. Analysis, 3 marks. Evaluation, 2 marks, 8 marks in total. 8 out of 8 इधर अगर तुम लेकर आ गए तो that's brilliant, you know. These are the mark picking ones. ए उठाना है तो इनमें सबसे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एक रिक्वायरमेंट है, तो अंडरलाइन कर लिया करो या तो इसको इस तरह से। Explain the difference between a public good and explain the difference between a free good. ओके, ये तो मुझे 3 मार्क्स नजर आ गए इधर ही। इस तरह से 1 मार्क, 1 मार्क, दोनों एग्जाम्पल्स लिखने के 1 मार्क, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसमें कोई ज्यादा वेरिएशंस है नहीं। And consider whether a market economy can ever produce public goods. I do tell my kids कि market economy को भी explain कर लिया करो, but there is no mark for it, but कर लिया करो ना। ठीक है, कंसिडर क्या करना है, एनालिसिस क्या करना है? एनालिसिस इज कंसिडर whether market economy can ever produce this good. Can it ever produce this good? कौन सा वाला गुड? पब्लिक गुड्स। तो यानी कि तुम्हें पब्लिक गुड्स के अंदर एनालिसिस करना है कि वेदर और वेदर नॉट, रिमेंबर बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट यूजुअली होनी चाहिए। अगेन इसमें एक थोड़ा सा वेरिएशन था, बट चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या करना है। सबसे पहली बात, पब्लिक गुड्स क्या होता है? पब्लिक गुड इज नॉन एक्सक्लूडेबल एंड पब्लिक गुड इज नॉन rivalry. Should I give you mark? Nope. I will give you mark when you're going to
Define me these terms. What do we mean by non-excludable? So what I mean by non-excludable is that you cannot stop anyone from consuming the good. Simple. You write me that in easy alfazon mein, I give you mark because I know you understand. If you want to do it with an example, the best example are the ones which are most used ones. Please, please, please do not come up with another example. Unless the question has already said कि, you know, public good के अंदर use um, army or defense or something like that, or a street sign or something like that. If they've mentioned it, then you use it. Otherwise, please keep it basic. उसके बाद, um, what is a free good? Oh, sorry, rivalry. You define it. What does that mean? Once a good is provided and somebody uses it, it does not reduce for the others. It does not finish for the others. You write that? Fantastic. तुमने इसकी डेफिनेशन अच्छी लिख दी, इसकी थोड़ी सी वेग लिखी है. तुमने ये मुझे नहीं बताया कि इसकी डेफिनेशन ये है और इसकी डेफिनेशन, बिकॉज दिस इज व्हाट समटाइम्स पीपल डू. Hear me out. Please hear me out. Sometimes what people do is public goods are those goods which are non-excludable and non-rivalry. Full stop. Then they just simply say that public goods are those that if somebody uses it and it does not reduce for the other, okay? या फिर वो लिख देते हैं public goods are those goods in which you cannot stop someone else from using. What I'm trying to say is एक सेंटेंस में बच्चे ये लिख देते हैं और दूसरे सेंटेंस में विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग दोनों डेफिनेशंस लिख देते हैं. आई विल नॉट गिव यू मार्क. अंडरस्टूड? क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें पता है कि नॉन राइवलरी की ये डेफिनेशन है और एक्सक्लूडेबिलिटी की ये डेफिनेशन है. आई डोंट नो. समटाइम्स व्हाट किड्स डू इज नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरी, और फिर डेफिनेशन दे देते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल की पहले और नॉन राइवलरी की बाद में. तो फॉर मी दैट इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क, because you are not clearly stating कि non-excludable की ये है और non-rivalry की ये है. Until and unless I'm sure of that, I will not give. ठीक हो गया? So be safe. Word definition. Word definition. And make sure you clarify. It's very similar to वो जो हम diagram के साथ भी करते हैं. Okay. Moving on. फिर यही मैं तो हमेशा तुम्हें कहूंगा कि प्लीज इन वर्ड्स को एग्जाम्पल के साथ अप्लाई करके प्रूफ कर दो. देन आई हैव नो वे कि मैं तुम्हारे मार्क काट सकूं और ना तुम्हारे से गलती होगी. ओके. नेक्स्ट. जो फ्री गुड होता है, फ्री गुड के अंदर एक मार्क के लिए मुझे वही उनमें से कोई भी एक अल्फाज आई एम हैप्पी विद. नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नो एफओपीज आर यूज्ड. दे आर abundant. सारे लिख दोगे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं एक मार्क दे दूंगा. कोई भी एक भी लिख दोगे तो मैं एक मार्क दे दूंगा. फिर उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल होना चाहिए. एग्जाम्पल कुड बी सनलाइट. डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स. सनलाइट इज गुड इनफ. And you can talk about how abundant it is and it's always there, and you're not giving up anything and all of that. You get yourself 3 marks. A lot of time what happens is कि बच्चे इसको एक्सप्लेन इतना लंबा कर देते हैं कि वो जब फ्री गुड एक्सप्लेन करते हैं, फ्री गुड में वो ये डेफिनेशन दे देते हैं और इसकी एग्जाम्पल देना भूल जाते हैं. बाय द वे, एग्जाम्पल्स व्हेन दे राइट लाइक दिस, दोनों के एग्जाम्पल दोगे तो 1 मार्क मिलेगा. दोनों में से एक भी गलत हो या मिसिंग होगा तो वो मार्क नहीं मिलेगा. देयर इज नो हाफ मार्किंग. टू मेक श्योर कि फिर तुम्हारी दोनों चीजें भी होना जरूरी है. आर वी क्लियर? ऑलराइट, एक्सलेंट. कोई सवाल हो तो प्लीज पूछो. आई डोंट थिंक सो फार एनी. Sir, will we explain the difference between them?
like like 3 4 lines में will actually No, know. So, but no, you. wouldn't we stray from the question then? Yeah, but what we're thinking is कि अगर तुम इसकी definition दे देते हो ना, तो that is sort of like a different. We're not doing कि तुम बोलो कि public goods are non-excludable, non-rivalry, and free good is excludable and right. वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो application ही नहीं है. That Yeah, case would only apply जब it's on the same tier. Instead of free good, it was public private good. तो फिर मैं डिफरेंस में बता सकता हूं कि नॉन एक्सक्लूडेबल ये और एक्सक्लूडेबल ये है, नॉन राइवलरी ये और नॉन राइवलरी ये. यू अंडरस्टैंड? तब सिर्फ उसी टीयर yeah, पे ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है. अच्छा, वन ऑफ द डिफरेंस व्हाट यू कैन आल्सो डू इज पब्लिक गुड इज इकोनॉमिक गुड, क्योंकि वो रिमेंबर मेरी हायरार्की, पब्लिक गुड कम्स अंडर इकोनॉमिक गुड एंड फ्री गुड. yeah. तो फिर तुम ये कर सकते हो कि वन ऑफ द डिफरेंस इज कि पब्लिक गुड जो है वो एक इकोनॉमिक गुड होता है, और इकोनॉमिक गुड जो होता है उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, और फ्री गुड के अंदर Yes, जो yes. है देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. There is no mark in the marking scheme. I have seen a lot of kids do that. It is not wrong, honestly. But अगर एग्जामिनर इन फ्यूचर अगर वो कर लेता है और वो मार्किंग स्कीम में इस डिफरेंस को फैक्टर इन कर लेता है, तो देन a kid who does not do is in a trouble. Yeah. Lekin make sure that throw all the darts, make that difference, give the public good a definition. If public good is being explained and you don't explain through non-rivalry and non-excludability, 100% you're in trouble. And still, I'm telling you, 250 papers के अंदर there is still 50 people who will do that. By the way, out of 250 people, close to 240 people attempted this question and not the other one. हर साल दो क्वेश्चन, टू और थ्री में से एक ओवरवेलमिंग क्वेश्चन होता है, विच मीन्स एक इजी सवाल होता है, और एक थोड़ा सा नॉच अप कॉम्प्लिकेटेड होता है. 95-98% ऑफ द किड्स अटेम्प्ट द सेम एग्जामिनेशन. तो उससे एक इशू ये जरूर होता है कि तुम्हारे रॉ और एडजस्टेड मार्क्स में एक वेरिएशन आती है, 2-3 मार्क की अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए एडजस्टेड मार्क्स में. बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. अब क्वेश्चन का एनालिसिस में हम क्या करेंगे? तो एज फार एज एनालिसिस गो, तुमसे सवाल सिंपल सा पूछा गया है कि क्या मार्केट इकोनॉमी एवर प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स. आई विल ऑलवेज टेल यू कि सबसे पहले यू शुड डिफाइन मार्केट इकोनॉमी, जिसके अंदर आप बोलोगे कि मार्केट इकोनॉमी जो है उसमें इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स रिसोर्सेज को ओन करती हैं. वी हैवंट डेल्ट विद दिस टॉपिक. आई थिंक वी शुड डू इट. दैट शुड बी आवर नेक्स्ट टॉपिक. मार्केट इकोनॉमी जो है उसमें इंडिविजुअल्स और फर्म्स के पास प्राइवेट ओनरशिप होती है. दे आर द डिसीजन मेकर्स. डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड्स where the resource allocation will be. Will I get marked for that? Of course not. You will not get marked for that because that's not what the question is. The question is के factors of sorry मार्केट इकोनॉमी में पब्लिक गुड कभी प्रोड्यूस होंगे कि नहीं होंगे. तो इसका आंसर फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं. पहली बात, इफ यू आर राइटिंग अबाउट पब्लिक गुड एंड एक्सप्लेनिंग कि मार्केट कभी प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी, एंड यू डोंट टॉक अबाउट द फ्री राइडर प्रॉब्लम, you can't answer this question without the free rider problem. You know what that is? The free rider problem? Kids have a lot of difficulties in explaining the free rider problem. एंड इवन दो तुम लोग ये पढ़ लो, फिर भी तुम लोग फ्री राइडर प्रॉब्लम के अंदर स्ट्रगल करोगे. आसान लफ्जों के अंदर, आई विल टेक द फ्री मार्केट प्रॉब्लम फ्रॉम द मार्किंग स्कीम फॉर यू, ताकि हमारे पास कोई मसला रहे ना इसके अंदर. व्हाट इज द फ्री राइडर? नॉर्मली तो मैं जिस तरह से फ्री राइडर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूँ इज वेरी सिंपल. वंस यू प्रोवाइड द गुड, you cannot stop anyone from
consuming the good, whether they have paid or not. Okay? So when you can't do that, when you can't separate the people, and the second part of the free rider problem is once the good is provided, anyone can benefit from that good. That's the free rider. एक दफा जब स्ट्रीट लाइट लगा दी, now anyone crossing through that can use that and benefit from that product. तो ये फ्री राइडर प्रॉब्लम है जिसके अंदर it is impossible for us to charge people, right? तो इधर इन्होंने क्या बताया? What three things needs to be there for us to mark you? Number one, the characteristic of public good makes it difficult for consumers to register a demand in the market, leading to free rider problem. Um, yeah, चलो बहुत ही हैवी अल्फाजों के अंदर इन्होंने एक बहुत सिंपल सा आइडिया ये लिखा है कि the non-excludability and the non-rivalry, when public goods are non-excludable and non-rival, it is impossible for us to separate who has paid and who has not paid. So anyone who has not paid can benefit from the product. अब देखो मार्क कैसे मैं दे रहा हूं. अगर तुमने कहा कि पब्लिक गुड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एक फ्री राइडर प्रॉब्लम आता है, ओके, जिसके अंदर वी कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम कंज्यूमिंग, तो मैं एक मार्क तुमको उसका दे दूंगा बिकॉज तुमने फ्री राइडर को कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक लिंक दिया है, जैसे भी एक्सप्लेन किया है. फिर उसको फर्दर एक्सप्लेन कैसे किया है, तो एक सिर्फ और सिर्फ फ्री राइडर प्रॉब्लम और कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लो ना कि तुमने कनेक्शन बनाया कि पब्लिक गुड्स के जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो फ्री राइडर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक मार्क. अभी तुमने फ्री राइडर समझाया भी नहीं. फिर तुमने कहा फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है, मीनिंग दैट पीपल कैन एंजॉय द बेनिफिट विदाउट पेइंग. ओके, कि मतलब वंस द गुड इज प्रोवाइडेड एंड लोगों कैन कंज्यूम दैट गुड वेदर दे कंज्यूम इट और नॉट एंड दे बेनिफिट फ्रॉम इट. एंड thirdly, they want the conclusion of that consideration कि will the market economy provide them or not. Overwhelmingly, the chances are that they will not provide it. ठीक है, हमें ये तीन चीजें अगर तुम लिखोगे तो तुम्हें मार्क मिलेगा. Percentage wise, majority of the kids did not do this. Market economy is unlikely to provide it. Okay, they did not conclude at this point. They were writing either udhar ka, but simply excludable rivalry, free rider problem pura explain karo with the idea that people can use it without paying for it, and then you provide. Khatam ho gayi baat, you get yourself the 3 mark. Ab consider whether the market can ever produce, ever being the key word here, can it ever provide. तो एवर का मतलब ये हो गया कि लेट्स डिस्कस कि मार्केट के अंदर ऐसा क्या सीन है कि वो हो सकता है. आई वुड लाइक टू नो इफ यू नो दिस बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोग ओ लेवल से ये करके आ रहे हो, तो यू वुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. जब आप इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़ते हो तो कौन से होते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, mixed economic system, and you have the planned or the command economic system. Any problems here?
With these four, do you have an understanding of these four economic systems from your O level? Because इस क्वेश्चन में उन्होंने मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की बात की है, राइट? आर क्लियर? ये मुझे प्लीज बता दो कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दीज फोर इन एनी वे, और यू अंडरस्टैंड ऑल फोर? या, सो वी आर क्लियर विद दीज ऑल फोर. ओके. इस क्वेश्चन के अंदर बिकॉज दे मेंशन इन द क्वेश्चन कि ये मार्केट इकोनॉमी है, it's not a free market. Okay, free market is a theoretical idea. Free market does not exist in real. प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यू हैव मार्केट इकोनॉमी, जिसके अंदर हम यूएसए को मार्केट इकोनॉमी कहते हैं. मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल आइडिया? मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट एग्जिस्ट एंड they have some rules and regulations that they can enforce. They will not directly provide goods, but they can influence. What I mean is कि क्या मार्केट इकोनॉमी एवर प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स? तो इन योर इवैल्यूएशन इफ यू से कि अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी दे दे, सब्सिडी, द मनी, कि ये लो प्राइवेट सेक्टर, ये लो पैसे, गो एंड प्रोड्यूस सम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पीपल, दीज स्ट्रीट लाइट्स एंड ऑल, तो ये गुड प्रोवाइड हो सकता है. ओके. सो इन दैट सर्कमस्टांस, सो ये अब वो एवर की हमने वो बात कर ली है कि विल दे बी एवर. तो इवैल्यूएशन के अंदर व्हाट दे आर गिविंग मार्क फॉर इज कि अगर तुमने ये लिखा है कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर दे तो फिर तुमको मार्क मिल जाएगा, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है आ, वो अपनी कोई मार्केटिंग की वजह से या अपनी कोई इमेज बिल्डिंग की वजह से या किसी सोशल वेलफेयर रीजंस की वजह से अगर वो प्रोवाइड कर देता है, तो दैट इज ऑल ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल सिचुएशन इन विच कैन दे एवर प्रोवाइड इट. But our main should be that it is unlikely that the market economy can ever produce public goods. मुझे इनकी मार्किंग स्कीम से ऑनेस्टली प्रॉब्लम है, बिकॉज इन्होंने जो एनालिसिस का है और कंक्लूजन का है यहाँ पे ये जो इन्होंने मार्क दिया है, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. बट क्योंकि उन्होंने दिया है एंड दे आर अनविलिंग टू लिसन टू अस, तो what should have happened was, and what when I was reading a lot of kids scripts and I saw that they made actually more sense, what they did was they discussed कि मार्केट फ्री राइडर प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली दे कैन बेनिफिट विदाउट कंज्यूमिंग इट. लेकिन मार्केट के अंदर अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे दे तो ये गुड प्रोवाइड हो सकता है. यू सी, तो ये मेरी नजर में तो एनालिसिस होना चाहिए था कि क्या फ्री मार्केट कभी भी पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा. तो एनालिसिस शुड बी अ टू साइडेड डिस्कशन. बट द गुड थिंग इज इवन इफ यू डू दैट, जब तुम अपने एनालिसिस में ये बात लिखोगे ना कि अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी है तो फिर उस केस के अंदर मार्केट्स प्रोवाइड कर देंगी, तो मैं तुमको इवैल्यूएशन का मार्क दे दूंगा. ठीक है. एनालिसिस के अंदर अगर फिर तुमने अपनी इवैल्यूएशन के अंदर ये लिख लिया कि मार्केट इकोनॉमी इज अनलाइकली टू प्रोड्यूस, तो मैं तुमको एनालिसिस का मार्क दे दूंगा, गिवन कि तुमने ऊपर फ्री राइडर प्रॉब्लम और ये समझाया होगा. तो देन आई विल गिव यू दिस mark also. So remember, there are times when a lot of your evaluation points can be considered as analysis. तुमने उसको evaluation सोच के लिखा था, लेकिन असल में वो analysis का हिस्सा था. But since you did mention government giving and market providing in that case, I have no choice but to give you the mark. ठीक है. So however you understand the question, analysis needs to be a two-sided argument. You make sure you do that. लेकिन ज्यादातर हमारा ओवरवेलमिंग ये होता है कि विदाउट एनी असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, मार्केट
इज अनलाइकली. अच्छा, मार्केट में क्या होता है, और फ्री मार्केट के अंदर ये जो एक डिफरेंस तुम्हें पता ही है, बिकॉज यू आर नॉट रेजिंग एनी क्वेश्चन, सो आई एम अस्यूमिंग कि फ्री मार्केट के अंदर देर इज 100% प्राइवेट सेक्टर, देर इज नो गवर्नमेंट. ओके. लेकिन मार्केट इकोनॉमी के अंदर देर इज ए मेजोरिटी ऑफ ए प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, देर इज अ मेजोरिटी ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर, but government exists. Okay, there is government, but they're only indirectly, only indirectly they can provide the goods and services through taxes and all. Okay, there will be no direct intervention. Mixed के अंदर government has a direct intervention, meaning that government खुद स्ट्रीट लाइट लगा देगी, खुद बस सर्विस प्रोवाइड, दैट्स बस सर्विस इज नॉट पब्लिक गुड, स्ट्रीट लाइट लगा देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगी, रोड नेटवर्क्स बना देगी, खुद स्कूल्स बना देगी, खुद हॉस्पिटल्स बना के रन करेंगी. दैट्स व्हाट डायरेक्ट इंटरवेंशन मीन्स. ओके. तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस मार्केट इकोनॉमी का आइडिया एंड हाउ गवर्नमेंट कैन इंटरफियर and indirectly provide the goods and all. Are we good so far? So this is a good essay to start with. If you can write me this one also, that would be ideal. At least एक एक कर लो ना. आज दो जो मैंने essays कराए हैं, please लिख लो यार. You have a weekend. अभी अभी fresh है दिमाग में. Book खोलो. I've sent you the notes both for PPC and the the public and the private goods वाला, पूरा types of goods का. Open that और मुझे ऐसे कंस्ट्रक्ट करो और मुझे भेज दो. ठीक हो गया. एंड नेक्स्ट क्लास आई विल डू अ लिटिल बिट मोर. आई थिंक आवर नेक्स्ट क्लास इज ऑन ट्यूसडे, so let me deal with that on Tuesday. 2 से 3 इसके ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड एक्स्ट्रा एक दो क्लासेस करूंगा, बिकॉज एटलीस्ट लेट्स डू as many